Hello friends, welcome to my educational channel GravityTech. In today's video, we will cover second part of mathematical logic chapter. First part we have already covered and uploaded to this channel, which basically covers all the basics of mathematical logic chapter. This video will be mix of English and Hindi so that it will help everyone to understand the concepts and examples and terminologies what are being used in fundamental mathematical logic. Okay. Now, before going to the next slide, we will have a slide recap, quick recap, but I would suggest you to go through the previous video, the first video, so that you understand this video fully. Okay, now let's see what we have as a part of this. So objective of this session is going to be what? A quick recap what we did in the first video, then basic connectives which are used in logic, truth tables and how to write the truth tables, logic properties, and then logical equivalence. Right, now let's see a quick recap of first session what we have covered. I am gonna basically uh, put that into just 4 sentences. Right, very first thing, जब भी आपको अगर कोई पूछता है what is proposition, the given sentence is proposition or not, what you should check, is it assertive sentence very first. If it is assertive sentence, then only it can be proposition. Remember, matlab there are 4 types of sentences in English: assertive, interrogative, imperative, and exclamatory. Assertive is the only sentence which can be proposition. Interrogative matlab question mark. Imperative matlab a kind of command or request. Stand up, right? Come in, like that. And exclamatory matlab a kind of exclamation, right? Where you will find the exclamation mark in the sentence. So what does that mean? Interrogative, exclamatory, and imperative sentences are not propositions. Remember, okay? So only assertive sentences propositions होते हैं, बाकी का इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव ये प्रोपोजिशंस नहीं होते. एवरी प्रोपोजिशन हैज अ ट्रू वैल्यू. कोई भी सेंटेंस ले लो आप, assertive सेंटेंस ले लो, वो एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. सो एवरी प्रोपोजिशन हैज अ ट्रू वैल्यू. If it is true, we say it as a T by capital T, and if it is a false, we mention it by capital F. F मतलब वो false है, T मतलब वो true है. And अभी होता है कि मतलब एक ही सेंटेंस आप एक ही प्रोपोजिशन नहीं दिया होगा, राइट? हो सकता है कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोजिशंस एट द सेम टाइम, दे हैव गिवन लाइक मल्टीपल प्रोपोजिशंस 1 2 3. तो इस टाइम पे क्या करना होता है, राइट? यू बेसिकली कम अप विद ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दैट कॉम्बिनेशन, करेक्ट? एंड देन ऑल पॉसिबल, and then when we make a table of all those possible truth values, it's basically called as what? Truth table. These are the 4 things which are just kind of takeaways from the first session. Now let's look at what are the basic connectives. जब हम लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक की बात करते हैं तो बेसिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट? सो बेसिक कनेक्टिव्स, अब मैथमेटिकल लॉजिक को छोड़ के अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात की जाए तो अगर आप दो से ज्यादा सेंटेंसेस एक साथ जोड़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू कनेक्ट 2 or more than 2 sentences in English language or in any other language, what you will basically use, you will use some logical connectives, right? This and this, right? This or this. If this happens, then this will happen. If this happens, then this, and if that, then this, right? That is if and only if. No, I don't want that. So basically, the words or phrases which are used to connect 2 statements, दो statements को connect करने के लिए जो phrases या words use होते हैं उसको बोलते हैं logical connect. And we all know which all logical connects we use. We connect 2 sentences using and, we connect 2 sentences using or, we connect 2 sentences using if then, if we connect 2 sentences using if and only if, we connect 2 sentences using not, we also connect 2 sentences using but, right? As soon as well as, but those are not going to be a logical connectives. Logical connectives only ये यही होते हैं, and or if then, if and only if not, right? So अगर आपको 2 sentences दिए है, right? Let's say Mumbai is a capital of Maharashtra, right? And Delhi is a capital of India.
मैंने अभी आप बीच में एंड यूज किया, इफ यू रिमेंबर राइट, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, करेक्ट। सो दो प्रोपोजिशन, दो सेंटेंसेस थे जो मैंने एंड से ज्वाइन कर लिया, उसी तरीके से आप और दो सेंटेंसेस और से, इफ देन इफ एंड ओनली इफ और नॉट से ज्वाइन कर सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव। सो रिमेंबर दीज आर ओनली द लॉजिकल कनेक्टिव जो मैथमेटिकल लॉजिक में यूज होते हैं। ओके, नाउ फिर सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या? सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक सिंपल प्रोपोजिशन, अ सिंपल स्टेटमेंट जिसमें ये वाले कुछ भी यूज नहीं होते, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ नॉट। लॉजिकल कनेक्टिव जहां पे यूज नहीं होते दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। लेट्स से मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, अभी यहाँ पे मैंने एंड और कुछ भी यूज नहीं किया, तो एक ही स्टेटमेंट है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। सो अ स्टेटमेंट व्हिच कैनॉट बी स्प्लिट further into two or more statements is called as a simple statement. Now, what is a compound? Compound means it's a combination. It's a combination of two or more simple statements. It is called as a compound statement, right? So, what are the logical connectives now? Conjunction. Conjunction मतलब क्या? And. Remember, conjunction मतलब क्या? And. Disjunction. Disjunction मतलब क्या? Or. Disjunction means or. Conditional. That means if this, then that. That is called as implication, which is if then. Biconditional. That is double implication. That is if and only if. Negation of the statement, that is not. If I say, if my statement is like Mumbai is a capital of Maharashtra, if I want to negate it, अगर मुझे उसका negation करना है, what I will say, Mumbai is not a capital of Maharashtra, correct? So वो हो गया negation. So conjunction means and, disjunction means or, conditional or implication मतलब if then, right? Biconditional double implication मतलब if and only if, and negation of the statement मतलब not. Remember? Good. Let's go to the next slide now. व्हाट इज कंजक्शन? अभी कंजक्शन हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कंजक्शन मतलब क्या? एंड मतलब आपको दो सेंटेंसेस दिए होंगे, दो स्टेटमेंट्स, नॉट सेंटेंसेस, दो स्टेटमेंट्स, राइट? यू आर गिवन विद द टू स्टेटमेंट्स, sentences, and then sorry, statements, and then you basically join those statements using the and, right? See, so if the two statements are combined using the connective and, it is called as a conjunction. In other words, let's say P and Q are the two statements. Let's say P matlab Mumbai is the capital of Maharashtra, and Q is what? Delhi is the capital of India. तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? P and Q is called as a conjunction. मतलब आप कैसे बोलोगे? मुंबई is the capital of Maharashtra and Delhi is the capital of India. इस तरीके से बीच में and use करना है, और उसको डिनोट कैसे किया जाता है? P and C, ये उल्टा V जिसे हम कैप बोलते हैं, इस तरीके से। अगर P और Q ये दो स्टेटमेंट्स है तो P और Q is what? Conjunction. Sorry, P and Q. This is called as and we read it as what? P conjunction Q or P and Q. Simply आप इसको P and Q ही read कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए. P and Q is basically the easiest way to read this out. Yeah. So the conjunction P and Q is true only if both the P and Q are true, right? See, when it says and, what does that mean? This and this, that means both has to be true. And means both has to be true, then only the result will be true, right? Otherwise the complete result will not be true. So आपको ये ध्यान में रखना है कि जब जहां पे एंड होता है मतलब दोनों के दोनों जब ट्रू रहेंगे तभी आंसर फाइनल क्या आएगा? इसका ट्रू आएगा। सो अगर हम इसको ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन P एंड Q, सी अभी इसका एक आइडिया है। अगर आप P और Q का लिखना चाहते हो, राइट, टेबल कैसे लिखना है आपको? सो देयर आर टू राइट्स, सो देयर इज अ रूल। अगर यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है सो टोटल एंट्रीज कितनी आएंगी? 4, 2:2। अगर यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए 1, 2 एंड 3, सो 2:3। 4 दिए हुए तो 2:4। अगर n स्टेटमेंट्स दिए हुए तो 2:n रिकॉर्ड्स रोज यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे दो ही होने के कारण 4 रोज आएंगे। सो सबसे पहला जो है उसको क्या करना है? 4 है ना, तो हाफ ट्रू हाफ फॉल्स, सो TTFF। जो नेक्स्ट रहेगा इसका हाफ TF राइट। सो इस तरीके से आपको इसके ट्रूथ वैल्यूज P और Q के लिख लेने। सो P विल बी व्हाट? TTFF, Q विल बी व्हाट? TFTF। नाउ व्हाट यू वांट? P और Q, और P और Q क्या होता है? सॉरी, P एंड Q। P एंड Q का मतलब क्या होता है? अगर दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू आएगा। सो T T देन T। इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है कंजक्शन के लिए?
If both are T, then T. T is T. Otherwise, जहां पे भी अगर दोनों जगह T नहीं दिखेगा, all will be what? False. So P and Q is basically what? T, F, F, F. This is what the truth table of conjunction, right? So remember, conjunction is what? When both are true, then it is true. It is denoted by this kind of cap. Yeah. Now, what is disjunction? Disjunction means or. So if the two statements are combined using the logical connective or, then it is called as a disjunction, right? And in other words, we can say if P and Q are the two statements, then P or Q is called as a disjunction, and it is denoted by P V Q, right? This is how it is denoted. So it और इसको read कैसे करते हैं? P or Q or P disjunction Q. लेकिन P or Q will be the good way to read it, right? Easiest way to read it. See, अभी देखिए और का मतलब क्या? अगर इफ ऐसे दिस और दैट, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो मुझे फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू. और मींस एटलीस्ट वन. अगर एक भी दोनों में से ट्रू है तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू. सो द डिंजेक्शन पी और क्यू इज फॉल्स इफ बोथ आर फॉल्स, और अदर वर्ड्स पी और क्यू इज ट्रू इफ एनी वन ऑफ दिस इज व्हाट? ट्रू. अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये क्या आएगा? ट्रू. सी, नाउ सेम द ट्रूथ टेबल पी और क्यू तो वही लिखना है हमको, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, लेकिन हमको पी और क्यू, और मतलब क्या? अगर एक भी टी है तो आंसर क्या आएगा? टी. इन दोनों में दोनों टी है तो आंसर टी. इन दोनों में से एक टी है, आंसर टी. इन दोनों में से एक टी है, आंसर टी. इन दोनों में से एक भी टी नहीं है, सो आंसर एफ. सो पी और क्यू का ट्रूथ टेबल इस तरीके से आता है. सी, ध्यान में रखने के लिए आपको क्या रखना है? पी एंड क्यू मतलब दोनों के दोनों टी. इफ बोथ आर टी देन टी, अदरवाइज फॉल्स. डिजंक्शन के लिए क्या ध्यान में रखना है? इफ एटलीस्ट वन इज टी देन टी, अदरवाइज फॉल्स, राइट? एटलीस्ट वन, एक भी अगर टी रहा तो. ओके. नाउ व्हाट इज कंडीशनल? इफ देन, right? This is easy, but you just need to be a kind of remember it, right? See, if the two statements are combined using the connective if then it is called a conditional or implication. Let's say uh, Rakesh will come to my home, we will study. ये जो दो स्टेटमेंट्स है, राकेश विल कम टू माय होम, वी विल स्टडी, इन दोनों को स्टेटमेंट को मैं इफ देन से ज्वाइन करता हूँ. इफ राकेश कम्स टू माय होम, इफ राकेश विल कम टू माय होम, देन वी विल स्टडी. देखो, मैंने दोनों स्टेटमेंट जो थे, दोनों स्टेटमेंट्स को किससे ज्वाइन कर दिया? इफ देन. करेक्ट. सो दैट्स हाउ इट इज. सो दो स्टेटमेंट्स जब कंबाइन किए जाते हैं इफ देन से, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. सो इन अदर वर्ड्स, पी एंड क्यू आर द टू स्टेटमेंट्स, देन इफ पी then Q is called as a biconditional. और उसको दिखाया कैसे जाता है? How it is denoted? It is basically denoted by P implication Q by this single arrow or this kind of arrow, right? And it is read as P implies Q. इसे किस तरह से रीड किया जाता है? P implies Q and then if P then Q. See, अभी इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे रिमेंबर करना है? TF. How to remember? For TF the answer is F, otherwise true, right? So TF को F, इस तरीके से आपको इसको रिमेंबर करना है. So the conditional statement P implies Q is false. Only P is true and Q is false, right? Otherwise it is true. So TF is what? F. So truth table किस तरीके से आएगा कंडीशनल का? P T T F F, Q T F T F. So P implies Q will be what? Only TF जो रहेगा वहां पे F आएगा. TF is F, right? और कहीं पे TF है नहीं, तो otherwise everything is what? T T T T. राइट, रिमेंबर. सो इम्प्लीकेशन के लिए क्या होता है? टी एफ के लिए टी एफ, अदरवाइज एवरीथिंग इज ट्रू. नाउ दिस इज आल्सो काइंड ऑफ लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स. पी इंप्लाइज क्यू को किस तरीके से बोला जाता है? पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू. हो सकता है आप जब एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे, राइट, उसमें दे डोंट गिव डायरेक्टली इफ देन और इंप्लाइज भी नहीं दिया होगा. वो हो सकता है इस तरीके से दिएंगे, P is sufficient for Q. What does that mean? P implies Q. Q is necessary for Q. P, that means P implies Q. P implies Q. Q follows from P. P only if Q. इन सभी स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब होता है, P implies Q. If P then Q. Remember. So अगर आपके एग्जाम में कुछ इसमें से कोई आता है, then that means it is P implies Q. Okay. Now biconditional. That is called as a double implication. मतलब
if and only if. So if the two statements are combined using the logical connective, if and only if, then it is called as a biconditional, right? So in other words, P and Q are the two statements, then P if and only if Q is called as biconditional. मतलब P, see if and only if क्या होता है, it's basically a, it can be split in two different ways. P if and only if Q मतलब क्या, if P then Q, if Q then P, मतलब दोनों वे से ट्रू होता है, उसे बोलते हैं if and only if. Okay, now how it is denoted? It is denoted by double directional arrow. P double implies Q, or this way, right? And it is basically read is that P biconditional Q, or P if and only if Q, or P double implies Q, right? Double implies भी बोल सकते हो आप इसको. And इसका truth value कैसे आएगा? If both are same, then the answer is true, right? If both are same, दोनों का अगर TT है तो भी true, FF है तो भी true. Otherwise अगर दोनों different है तो क्या आएगा? It's going to be false. See, so the truth table for biconditional will be what? यहाँ पे दोनों सेम है, सो P तो TTFF आएगा, Q TF आएगा, सो दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है FF तो ट्रू, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग है तो FF. Easy. So this is what the truth table for the biconditional, right? Now let's look at the negation. Negation मतलब क्या? It's very easy. Negation हम जो existing statement दिया हुआ है उसको negate करो, मतलब उसका negative statement. Let's say जैसे भाई अभी मैंने बोला, राइट, मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, उसका निगेशन क्या आएगा? मुंबई इज नॉट ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इफ आई से मुंबई इज नॉट ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, उसका निगेशन क्या आएगा? मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, राइट? सो लेट्स सी. सो फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P, देयर इज अनदर स्टेटमेंट व्हिच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज फॉल्स. जब P फॉल्स होता है तो हम उसको ट्रू कर सकते हैं, उसे बोलते हैं निगेशन. या फिर अगर P ट्रू है तो उसको फॉल्स कर सकते हैं, उसको बोलते हैं निगेशन. और निगेशन कैसे डिनोट किया जाता है? negation of P. So negation किस तरीके से निकाला जाता है? Negation, there is a only way, one trick. Either include not or remove kind of not, right? Just a kind of maybe a hint. See, the truth table of negation will be what? Because negation is only applied on the only one statement, right? So let's say P. So for one statement, there are only two possibilities. Either it can be true or it can be false. So if P is true, negation will be what? False. And if P is true, false, then negation will be what? True. It's easy. And now note, negation of a negation of the statement is what? The statement itself. Agar P ka negation liya and then again you are taking negation of that. So negation of P will be equal to what? P. Remember, this is kind of one of the law. Now logical equivalence. What is logical equivalence? Right? Logical equivalence means हो सकता है आपको दो स्टेटमेंट के पैटर्न्स दिए हैं आपके यहाँ पे, मतलब दो तीन स्टेटमेंट्स हैं और उसको कंबाइन करके दे हैव बेसिकली come up with two different patterns, or they are asking whether two patterns are logically equivalent. How do we do that? So two statements patterns are said to be equivalent if their truth values are identical. अगर दोनों का truth values का कॉलम जो है इन ट्रूथ टेबल अगर वो सेम है तो that is basically what those two patterns are logically equivalent, right? We will see the examples. इसका हम examples देखेंगे. If the statement patterns A and B are equivalent, then we write it as what? A 3 lines, B. Okay, इस तरीके से लिखा जाता है if it is equivalent. Now see, what is a tautology? Tautology मतलब अगर आपको कोई statement pattern दिया हुआ है and जब आप उसका truth value निकालोगे, जो जितने भी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज है वो सभी अगर ट्रू आते हैं तो वो टोटोलॉजी, राइट? सभी, एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए भी ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए दैट पर्टिकुलर पैटर्न इज गोइंग टू गिव यू द फॉल्स वैल्यू, राइट? देन इट विल बी टोटोलॉजी. सब जगह पे टी 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 दिखना चाहिए, दैट इज टोटोलॉजी. वी डिनोटेड बाय व्हाट? स्मॉल टी. ओके, व्हाट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन? टोटोलॉजी का ऑपोजिट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. So a statement pattern whose truth value is false for all possible combinations of the truth values of its prime components is called as a contradiction. Contradiction में सब पूरा क्या होना चाहिए? पूरे possible values will be what? False, 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 false. F, 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 F. And that is denoted by C. और जो tautology भी नहीं होता है, contradiction भी नहीं होता है, उसे बोलते हैं contingency. Contingency is what? A statement pattern which is neither tautology or nor a contradiction.
right? Now let's see. They are saying now write the conjunction and disjunction of the following statements. यहाँ पे कुछ examples दिए हुए. They are asking us to write conjunction and disjunction, right? Conjunction means and, disjunction means or. So let's take a first example. There is a P statement. इसको किस तरह से read किया जाता है? P is a statement. What is a statement? Motherboard is hardware and Q is a statement. Keyboard is the hardware. इन दोनों को हमको conjunction से add करना, मतलब and से. What you will do? Motherboard and keyboard is the hardware, because hard is a hardware, right? This is going to be like common. So motherboard and keyboard are hardwares, right? And then अगर और है तो motherboard और keyboard is a hardware. ये easy है. Similarly, Lotus Word Pro is a word processor, Notepad is a word processor. ये दो statements को हमको combine करना है using conjunction, that is and or. So it is easy. Lotus Word and Notepad are word processor. Lotus Word or Notepad are word processor. Antivirus is utility software. File management system is a utility software. Again, the same thing, right? Just utility software is the same, right? So antivirus and file management system are utility softwares. Antivirus or file management system is a utility software. MS Excel is a spreadsheet. Visual Basic is a spreadsheet. Then MS Excel and Visual Basic are spreadsheets. MS Excel or Visual Basic is a spreadsheet, right? It was easy. Now, they're saying write the negation of the following proposition. जो नीचे जो propositions दिए उसके negations दो, right? So what are those negations are? Yeah. So see, the statement given is what? Discord is a communication app. इसको just negate करना है, मतलब इसको false करना है. Discord is not a communication app. See, negation of P. Discord is not a communication app. MySQL is a database management system. You can simply say MySQL is not a database management system. Easy. Next. Which of these is a proposition and justify your answer. नीचे जो दिए हुए उसमें से कौन कौन से propositions है और कौन से नहीं है. Right. Now, see, will it rain? मैंने पहले ही बोला था there is only assertive sentence होता है जो proposition होता है, otherwise other sentences are not propositions, right? So this is a question mark, so not proposition, because this is an interrogative sentence. Wow, what a decent mobile. This is exclamatory sentence, so not a proposition. VLC is a movie player. This is assertive sentence, so this is a proposition. Chetan Bhagat is the most famous writer in the world. Yes, it is assertive sentence, so it is a proposition. The mouse is a software. Yes, it is a proposition. Why? Because this is an assertive sentence. Easy. Next. Now they are saying draw the truth tables of the following logical statements. Right. Now we need to basically draw truth tables of following logical statements. Now the first statement is P implies Q or Q, and the second is P and negation of Q. देखिए अभी जब भी ऐसे कुछ हमको ट्रूथ टेबल लिखना होता है, सो सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू लाइक लुक एट कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर P and Q? There are only two given, right? So there are only two given like this. So how you can basically write, correct? So you will say P and Q, correct? So what is P and Q? There are only two, so there will be four entries, right? So T, T, F, F, right? And then here it will be what? T, F, T, F, correct? This is going to PQ. Now you want P implies Q. देखिए अभी ये जो है पूरा, इसके अंदर हमें सबसे पहले P implies Q निकालना है और उसके बाद उसके साथ उसको और Q करना है. So now we will first find out P implies Q. So P implies Q क्या आएगा? P implies Q का what is, how do we find out P implies Q? If there is a TF, then F. Otherwise everything is false. Where is a TF? Here is a TF. So this will be F. Is there anywhere else TF? No. So this all will be what? T. 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 Correct. Now we got this part. Now we want to make it with the or, right? So हमें जो last निकालना है P implies Q. With this we want to find out the or Q. Correct. Now so this row एंड दिस रो, इन दोनों का डिजंक्शन मतलब और में क्या होता है, अगर एक भी हमको ट्रू मिलता है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू.
इन दोनों में से एक तो ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में एक भी ट्रू नहीं है, सो दिस विल बी व्हाट, फॉल्स, करेक्ट। इन दोनों में एक तो ट्रू है, सो ट्रू, देयर इज एटलीस्ट वन ट्रू, सो ट्रू। सो सी, this is what it is, correct. This is the truth table of the first case. So this is how you need to find out the truth tables, right? So ये मैंने करके दिखाया, अगला वाला directly we will put it, yeah. So let's see how it is. So see, P, T, T, F, F, Q, T, F, T, F, P implies Q क्या आएगा, only T, F के लिए F, बाकी सभी T's आएंगे, and then P implies Q और Q. What does that mean? इन दोनों में से जो भी अगर एक भी T है तो आंसर इज T, इन दोनों में एक भी T नहीं है, so this will be F. There is one, there is T, so T, there is T, so T. So this is how it is. Now next, यहाँ पे P Q और बाद में आपको negation P negation of Q निकालना है, then P और negation Q. So see, P T T F F Q T F T F, आप हमको we want negation of Q, right? So negation of Q will be what? Q का negation, T को F करना है, F को T करना है, T को F करना है, F को T करना है. Now what basically you need? You will need the or and of these two, P and negation of Q. And मतलब क्या? If both are T, then only T. So T F, दोनों T नहीं है तो ये आएगा false. यहाँ पे दोनों T है, सो आंसर आएगा T, राइट. यहाँ पे दोनों T नहीं है, false. दोनों T नहीं है तो false, correct. So this is how it is done. So this is how you can basically find out the or draw a truth tables for the logical statements. Okay. Now they are saying prove P or negation of P and Q is tautology. ये tautology, tautology मतलब क्या, ये जब हम इसका truth table निकालेंगे, इसका the column which is basically representing this will be all T T T T T T T. और यहाँ पे दिया गया है कि this we need to show it as a contradiction. Contradiction मतलब all of the values will be what, F F F F F. Now let's see. So सबसे पहले P and Q लिखेंगे हम लोग, P T T F F Q T F T F. Then we will find out P and Q, that is what, P and Q, and then we will find out negation of P and Q, right? And then with that negation of P and Q, we will make or with the P. Now let's see. So P, so see P is what here, TTFF, Q is what, TFTF. सबसे पहले हम निकालेंगे P and Q, that is P and Q. मतलब P and means what, both T then only T. यहाँ पे दोनों T's है तो this will be T and then there is nothing. यहाँ पे एक भी जगह पे दोनों T नहीं है, so सभी के सभी क्या आ गए, false, right? Now we want negation of this, right? So that means a negation of this part, correct. So negation of this will be this one. What will be it? T will become F and F will become T. So T will become F and all of these are F. So all these will be what, T. Now we want P or negation of P and Q. That means these two, the or of these two. Or means what? At least one T, then T. So there is a T here. So there is a T, right? Now here also T. So there will be T. Is there a T? Yes. Here is a T. So there is a T. Similarly, here is a T. So there is at least one T in everywhere, right? So thereby, if you look at this now, ये सब जगह पे क्या है, T T T T T. That's why ये क्या हो गया, tautology, right? Easy. So since all entries in this particular pattern, इसे pattern बोलते हैं, are true, that's why given proposition was tautology. Similarly भी इसको we will first find out P and Q, फिर उसका negation, फिर उसका और and then P. यही है दिस, ये पूरा का पूरा टेबल ऐसे कैसे आएगा, ओनली उसको क्या करना है, निगेशन करना है, राइट. सी ये पूरा टेबल ऐसे के ऐसे है. इफ यू लुक एट दिस कंप्लीट टेबल इज सेम एज द फर्स्ट एग्जांपल, और उसको जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, निगेशन. निगेशन मतलब क्या, टी को एफ कर दो, तो ये सभी टीज है तो ये सभी क्या आएंगे, एफ. सो ऑब्वियस अगर सभी के सभी एफ आ रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट. सो since all entries in this particular pattern are false, given proposition is what, a contradiction. Easy. The next,
नाउ दे वांट अस टू प्रूव, इससे बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है और एक पैटर्न दिया हुआ है, सो देयर आर टू पैटर्न्स, राइट? This is where maybe you can understand the logical equivalence definition. This is a pattern A, this is a pattern B. Now they want us to show these are equivalent, so pattern A is equivalent to pattern B using the truth table. So truth table find out करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, we will basically find, see like how many statements are there? Two. So T T F F, right? P के लिए, Q के लिए क्या आएगा? T F T F. Then we will find out P negation of P. Then we will find out negation of P and Q. Then after that we'll find out P or that part, and then negation of that, and then we'll concentrate on this. So let's solve one by one. एक हम solve करते हैं, right? Let's see. So this will be a truth table. If you look at here, so very first thing is a P, T T F F, Q, T F T F. अभी हमें ये वाला solve करना है, correct? ये वाला solve करने के लिए हमको negation of P निकालना है. So negation of P. P is what? This. अगर T T F F है तो आएगा क्या? F F T T. Because why? Negation में हम T को F कर देते हैं, F को T कर देते हैं. Now we want negation of P and Q. ये negation of P and Q. And मतलब क्या? Both T then only T. यहाँ पे both T कहाँ पे दिख रही है? यहाँ पे. So this will be T and बाकी all will be what? F. Right? So we got this now. Now with this we want to OR with P. P के साथ OR करना है. So this और P. और मतलब क्या? अगर एक भी T होता है तो आंसर इज T. सो इन दोनों में एक T है, सो आंसर इज T. इन दोनों में एक T है, आंसर इज T. इन दोनों में एक T है, आंसर इज T. इन दोनों में एक भी T नहीं है, आंसर इज F. सो वी गॉट नाउ दिस. नाउ इसका हमें क्या करना है? निगेशन. सो लेट्स निगेट इट, राइट? निगेट मतलब T को F करो, F को T करो. सो T T T F. सो ये आ जाएगा F F F F T. राइट? नाउ ये हो गया A. हम लोगों ने A निकाल लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द B. बी के लिए हमको निगेशन पी चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए, करेक्ट? निगेशन पी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या नहीं है? निगेशन क्यू नहीं है. सो लेट्स फाइंड आउट निगेशन क्यू. निगेशन क्यू क्या आएगा? यहाँ पे टी एफ है, सो निगेशन विल बी व्हाट? एफ टी, करेक्ट? नाउ वी वांट निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. मतलब निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, मतलब एंड मतलब क्या? दोनों अगर टी है तो टी. इन दोनों में है टी? नहीं, सो एफ. इन दोनों में है, दोनों टी है? नहीं, सो एफ. दोनों टी कहाँ पे है? दोनों टी है यहाँ पे लास्ट में. सो दिस विल ओनली बी ट्रू, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स विल बी व्हाट? फॉल्स. नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट, ये जो है कॉलम एफ 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 टी एंड देन एफ 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 टी, राइट? दोनों के दोनों कॉलम्स क्या है? सेम है. That's why this pattern and this pattern are equivalent. Easy. So this is how you can prove the logical equivalence of the two statements. So from the table it is proved. Yeah. Next, using the truth table, prove the following logical equivalences. अभी देखो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स है. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर? पी क्यू एंड आर. देयर आर थ्री. मतलब अगर थ्री है तो कितने रोज आएंगे? देयर विल बी 8 रोज, राइट? सो पी के लिए रहेगा टी 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 एफ 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 4 टाइम्स. क्यू के लिए रहेगा टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ. आर के लिए रहेगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ. एंड देन वी विल बेसिकली वर्क ऑन दिस. सो लेट्स सी. सो दीज आर, ऊपर मैंने कॉलम नंबर्स लिखे हुए हैं ताकि एट द एंड जब हम रिजल्ट लिखेंगे we'll be able to write it in terms of columns. So P, Q, R are the three statements, right? Look at here. P के लिए हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? It is right T T T T and then F F F F. यहाँ पे क्या लिया हुआ है? T T F F T T F F. R के लिए क्या लिया हुआ है? T F T F T F T F. इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है P Q R. Now पैटर्न ए देखते हैं हम लोग पहले. सो सबसे पहले हमको चाहिए Q और R. वी नीड Q और R. सो Q और R, इन दोनों का और मीन्स व्हाट? एटलीस्ट वन T. अगर एक T है तो T. इसमें एक T है, इसमें भी T है, इसमें भी एक T है, इसमें दोनों फॉल्स है सो फॉल्स, इसमें भी दोनों फॉल्स है सो फॉल्स. बाकी सब जगह पे एक एक T होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा? देयर विल बी अ वन T. ओके. सो Q और R बेसिकली this is a row, right? Now what we want, P implies Q और R. जो है P implies का मतलब क्या? TF को F. implies क्या होता है? TF को F. So you need to basically check where the P has T, right? And then Q or R actually has
a F. So wherever you will find the TF entry, you will basically write it as a F. So देखिए यहाँ पे T है, T, ये T और F है, so यहाँ पे F आएगा, right? Is there anywhere else TF? No. So बाकी सब जगह पे क्या आएगा? T. Understood? It's easy. So ये हो गया हमारा A part. Now let's concentrate on this. So we need P implies Q first. So P implies Q मतलब क्या? P implies Q. Again, P implies का मतलब क्या होता है? TF को F, right? Where is a TF? Here is a TF. So this will be F. Is there anywhere TF? Yes. This is a TF. So this will be also F. And there is nowhere else TF. So all will be what? TTs. Okay. ये हो गया P implies Q. Now we want P implies R. So A, this is a P and this is R. So again, TF की entries देखो यहाँ पे है T and F. So this will be F. Is there anywhere else? Yes. Here is a TF. So here is a F. Right. And there is nowhere else is a TF. So all will be what? T. Now what we want is OR of these two. इन दोनों का क्या करना है? और मतलब क्या? अगर एक भी टी है तो आंसर क्या आएगा? टी. इन दोनों में एक टी है तो आंसर टी. इन दोनों में भी एक टी है, आंसर टी. इन दोनों में एक टी है, आंसर टी. सो बेस्ट वे इज व्हाट? जहां पे दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स आना चाहिए. सो दोनों फॉल्स, यहाँ पे आंसर फॉल्स. बाकी हर जगह पे एक तो टी है ही. सो आंसर विल बी व्हाट? टी. राइट? सो दिस इज हाउ you basically need to find out the logical equivalence. And if you now look at this, both the columns, right? Column number 5 and then column number 8, both are same. See, T F F T. इसका मतलब क्या हो गया? These are logically equivalence patterns, right? Easy. So how to write it? This is how. So columns 5 and 8 are identical, so these are logically equivalent. Correct. So this is what actually I added from this video. In next video, we will see what are the quantifiers, what are the duals, what is converse, inverse, and contrapositive, what exactly the algebra, that is a logic laws of the statements, and some important points which you should remember about mathematical logic to solve any kind of example when you deal with mathematical logic, right? So guys, if you like the contents, do click on the like button of the video, subscribe to the channel to get updates about the all new videos, and share it with others as well so that other students will also get benefit of this. I wish you happy learning with the GravityTech. Thank you.